हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है शुड वुमेन परफॉर्म वेट ट्रेनिंग। ठीक है। पहले ये बहुत ही अनकॉमन था। विमेन्स मोस्टली वेट ट्रेनिंग करने से बहुत ही ज्यादा परहेज करते थे। दे वर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट व्हेन इट कम्स टू लिफ्टिंग वेट या फिर वेट ट्रेनिंग। बट नाउ विथ टाइम एवरीथिंग हैज चेंज ना। पहले वीमेंस को वेट लिफ्टिंग के बारे में बात करो तो दे यूज्ड टू बी अफ्रेड कि नहीं, वेट्स उठाने से मेरे साथ ये हो जाएगा, वेट्स उठाने से मेरे मसल बन जाएंगे, वेट्स उठाने से बहुत सारे देवर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर देम टू अवॉइड वेट ट्रेनिंग। बट नाउ with time everything has changed. Women have started indulging in a lot of weight training exercises. So पहला सवाल मेरा आपको ये है कि should women perform weight training? ठीक है। So yes or no? मेरा आंसर is very simple. Of course yes. ठीक है। Every individual, though it be मेल फीमेल या फिर कोई सीनियर सिटीजन या फिर नॉट किड्स, ठीक है, नॉट किड्स, आई विल नॉट रिकमेंड किड्स टू परफॉर्म वेट ट्रेनिंग। आई विल वांट देम टू वेट फॉर एटलीस्ट 18 इयर्स ना। वो अपने 18 साल कंप्लीट करने के बाद वेट ट्रेनिंग में इंडल्ज कर सकते हैं। बिफोर दैट ऑफ कोर्स दे कैन, बट अगेन दैट ऑल डिपेंड्स ना कि उनका गोल क्या है ना। इफ ही इज इनटू any athletic sport which requires a lot of strength, so I will definitely advise him. Otherwise मेरी तरफ से please don't engage into weight training at least until you complete your 18 years of age. तो ऑफ कोर्स यस के साथ व्हेन ना, कब से शुरुआत करना चाहिए? तो क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड है कि 18 साल होने तक वेट करो। 18 साल होने के बाद एवरी वन मेल फीमेल शुड एंगेज इनटू वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है। उसके बाद हाउ ऑफन ना, तो व्हेन इट कम्स टू हाउ ऑफन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केड्यूलिंग। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप बिगिनर लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर एडवांस लेवल। तो अगर आप बिगिनर हो तो यू कैन स्टार्ट विथ 3 days ऑफ वेट ट्रेनिंग पर वीक and progress according to your consistency of weight training ना। आप रेगुलर हो जाओगे तो you can progress। ठीक है। you can put it into variety of schedules, जैसे 3 days a week, 4 days a week, 5 days a week, depend करता है completely on your goal, आपकी जरूरत क्या है। then the question is not just weight training. Take it, it has to be weight training, it has to be cardio, it has to be a proper nutrition ना। सिर्फ weight train करने से आपको कोई benefit नहीं मिलेगा unless and until you don't do follow a proper structured nutrition plan. उसके साथ कार्डियो भी उतना ही important है जितना वेट ट्रेनिंग। डोंट जस्ट skip cardio because you've started doing weight training, though it be male or female। ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत जरूरी है कार्डियो, वेट ट्रेनिंग as well as nutrition. Then how long? As long as you want to stay fit। ठीक है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की कोई उम्र नहीं है। आप जब तक, मैं तो बोलूंगा till the time you're alive, one should engage into weight training or any type of physical activity, any type of, it can be yoga, it can be cycling, it can be anything जो आपको चैलेंज दे, उस तरह की एक्टिविटीज आपको करनी है, स्पेशली दोज विच यू लव डूइंग। ठीक है। जो आपको पसंद है करने के लिए। then the next in the question, should they perform the same way as male do? yes they can if they want to। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेल्स के लिए अलग वेट ट्रेनिंग होता है, फीमेल के लिए अलग वेट ट्रेनिंग होता है। female can also perform weight training quite similar to a male। ठीक है। if they want to। okay? don't force females जबरदस्ती के भाई, unless she's not willing to। if she's willing to perform, push her to the limits। if he's slightly reluctant कि वो, उसको लग रहा है कि उसके दिल में कोई भी या दिमाग में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग वेट ट्रेनिंग, तो प्लीज उसको सॉल्व करिए, पहले उसको encourage करिए with the benefits which I will be talking later in this video। point to be considered when it comes to weight training या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स। ठीक है। तो मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड द फीमेल हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है। तो एस्ट्रोजन हैज अ लॉट ऑफ important roles to play in a women's body. Similarly testosterone has a lot of important role to play in male body। तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत कम होती है जिसके वजह से दे lack strength,
they don't gain muscle as as a male can. So there are certain things now which needs to be considered when you talk when you engage or you make a female engage into weight training exercises. जैसे हार्मोन फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन के काम बहुत सारे होते हैं, एंड सिंस दे आर लो ऑन टेस्टोस्टेरोन, तो उन्होंने उनमें उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती एज कंपेयर टू अ मेल. सो consider this as an important point, because ना टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट वेट as good as a male can do. The next is the cartilage, which is the soft tissues. So if you compare the cartilage of a female, जो soft tissues होते हैं between your joints compared to a male, तो female के slightly I'm not it's not confirmed, but of course you will find a lot of females with a lot of joint problem as they age because of the cartilage. So अगर हम compare करें the cartilage of a male to female, तो females के cartilage थोड़े से वीक नहीं बोल सकता, बट थोड़े से worn out जल्दी हो जाते compared to a male. Maybe because of a lot of standing and other and also because of the hormones. ठीक है, बहुत सारे reasons होते हैं cartilage to get worn out, but one of the reason is simply कि they are softer or maybe they are slightly weaker than a male cartilage. Then one of the most important thing to be considered is the bone alignment. ना अगर आप hip joint देखे एक female का and a male का, तो the female have wider hip joint ना, उसके वजह से if you see it makes an angle this way है ना, something similar slightly towards the knee joint. इसके लिए if you'll see a woman squatting, she'll always bring her knees close while she squats down ना. So the alignment is specifically for a purpose. Now वो purpose है is pregnancy ना. अगर wide hip होने के वजह से the female or the fetus ना or the baby comes and fits into the hip joint and then it passes through her vagina. So that is the reason why God has made a wide hip of a woman. So wide hip होने का advantage क्या है? Baby can be born normal. दूसरा disadvantage क्या? उसकी वजह से alignment थोड़ा सा अंदर की तरफ होने की वजह से she may develop cartilage problem while squatting. So it's very important for a trainer to make sure that when a female squats, वो अपना knee joint पे खासा ध्यान रख के एक alignment, proper alignment maintain करने की कोशिश करें. And let's move forward. Will they look manly? ठीक है, if they, and now that we know that they don't have testosterone, which is a male dominant hormone responsible for muscle gain. So irrespective how hard they lift weight, they will never gain muscle and they will never look manly unless and until they take male hormones. ठीक है, आजकल बहुत सारी females you will see on social media ना showing big biceps better than males ना. So again naturally possible हो सकता है, but most of them engage into malpractices like taking male hormones na, and resultant is they can gain muscles like men. So if a female does not take any male hormone and engages into weight training activity, she'll definitely not gain any muscle. She'll not look bulky. Instead, she'll look chiseled, she'll look toned. Will they gain muscles? Of course they should. ठीक है, muscle gain होना ही चाहिए. I don't mean to have those big muscles like men, but a slight increase in muscle has to be there because हमारे joint को stable बनाते हैं हमारे muscles help करते in variety of movement ना, हम चल फिर सकते only because of muscles. तो slight increase in muscles will help you get better at your फंक्शनैलिटी ने, मतलब डे टू डे लाइफ में आप जो भी करते हो वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे. हाउ मच मसल्स, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीन्स ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल जीन्स दैट यू कैरी. एक फीमेल engages into weight training for 10 years will still not gain muscles same as compared to a female who's doing
for 2 years ना, if she has the genes, if उसके genetic structure में muscle gain is तो फिर she will never gain muscles. Of course she has to gain some muscle. ऐसा नहीं है कि weight training करने से muscle gain नहीं होता, होता है but बहुत ही marginal होता है, that's not even visible, ठीक है. So moving forward, should they lift heavy, ठीक है. They can, of course they can, of course they should. Heavy का कोई definition नहीं है. जो चीज मेरे लिए heavy है वो किसी और के लिए हल्की हो सकती है. जो चीज उसके लिए मेरे लिए किसी और के लिए heavy है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा heavy हो सकती है. So how much heavy will all depend on that particular individual or that person or that female who's engaging into weight training. So एक सबसे important सवाल अक्सर आता है ना, which I had been encountered many times in my career, कि should a woman perform weight training or any particular type of exercise during her periods. So मेरा पहले तो ऐसे होता था, when I started my training, every month I used to get calls from a female that she's not coming to the gym and उसका जवाब होता था she is sick. So मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि sick मतलब क्या है, to try and ask क्या है, but नहीं, I'm just not well, I'm unwell. और 3-4 दिन के बाद she used to come to the gym, then I used to ask her again कि क्या भाई क्या problem था, why did you didn't turn up, and she's like I was unwell. So being a male, हमारे कल्चर में वी डोंट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अमॉन्ग्स्ट फैमिली ना, मेल फीमेल डिफरेंसेस होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं होती है. सो देन स्लोली इवेंचुअली आई रियलाइज ना इट्स द those 4 days जब वो जिम वर्कआउट नहीं करती थी वर द डेज जब उसको उसका पीरियड्स होता था. सो पीरियड्स के दौरान वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट फीमेल, ठीक है. मेरा पर्सनल एडवाइस है कि एटलीस्ट 2 दिन शुरुआत के अवॉइड doing weight training or any form of physical activity, और बेटर और उससे भी ज्यादा बेटर है वेट फॉर 3-4 days, 3-4 दिन एक्टिविटी या वेट ट्रेनिंग करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कोई आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है. सो 4 दिन के बाद once you you're normal, not normal actually, once you are confident enough and you feel comfortable, that's when you should start doing activities ना, instead of थोड़ा सा confusion के साथ करो नहीं करो. And even if a female wants to, she can, उसका individual choice है, but आप उस दौरान उसको heavy weight training ना कराए. Try and avoid lower body exercises, keep her on upper body exercises. Simple, पहले 2 दिन ट्राई एंड अवॉइड, हो सके तो 4 दिन अवॉइड कर दो. अगर करना ही है तो फिर पहले 2 दिन अपर बॉडी वर्कआउट्स कराओ, ठीक है. एंड कीप इट वेरी लाइट, लो इंटेंसिटी, बिकॉज उस दौरान शी में एनकाउंटर अ लॉट ऑफ physiological changes, ठीक है, and emotional changes as in psychological changes. She may be upset, she may be distressed, बहुत सारे reasons होते हैं. She may be irritated, so आप उसको समझो और उस तरह से उसको ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, उसको एक्सरसाइज कराओ, make her feel good in those particular days, ठीक है. My advice, 2 दिन नहीं करना है तो करो, एंड 4 दिन नहीं करोगे तो और ज्यादा बेटर होगा. तो बेनिफिट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, ठीक है. क्या फायदे होते हैं वेट ट्रेनिंग के. सो अगर मैं बात करूं फीमेल की, वेट ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, नॉट जस्ट फॉर फीमेल बट फॉर मेल, फॉर एवरीवन हु एंगेजेस इनटू वेट ट्रेनिंग. बट अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें तो पहली चीज है वेट ट्रेनिंग से बढ़ती है स्ट्रेंथ, ठीक है. स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू नेवर नो, आप किसी अनजान रास्ते पे जा रहे हो एंड यू एनकाउंटर ट्रबल. इफ यू हैव स्ट्रेंथ, अगर आपके पास ताकत है तो आप बच के निकल सकते हो. अगर आपके पास ताकत नहीं है तो यू मे हैव टू सकम टू दैट डेंजर. दूसरा बेनिफिट है मसल टोन. आप ज्यादा बेटर टोन्ड लगोगे, आपका मसल्स आपकी बॉडी को शेप देता है, फैट शेप नहीं देता. वाइड हिप्स अच्छे दिखते हैं बट टू मच ऑफ फैट लुक्स बैड. सो मसल्स
आपके बॉडी को शेप देता है, सो आपका मसल टोन अच्छा होता है, मसल मास अच्छा होने के वजह से आप ज्यादा बेटर या एस्थेटिक या अपीलिंग दिखने लग जाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो वेट लॉस या फिर फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वेट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज इज बोन मास, आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल एज द एज दे देयर बोन्स बिकम वीक। वीक मतलब देयर बोन्स बिकम ब्रिटल। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फीमेल जिनको ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक प्रॉब्लम है, जिसमें उनके बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं और बहुत आसानी से टूटते हैं। सो वेट ट्रेनिंग का एडवांटेज क्या, बोन मास बढ़ता है और बेटर कंट्रोल ना, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपका कोऑर्डिनेशन है, यू नो हाउ टू मूव योर बॉडी इन अ कोऑर्डिनेटेड पैटर्न, तो आपका ज्यादा बेटर कंट्रोल होगा इन डूइंग एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंक्रीज इन बीएमआर। बीएमआर आपको पता है आपका कैलोरीज, आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है व्हेन एट रेस्ट। सो एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मसल मास बढ़ता है। मसल मास बढ़ने की वजह से आपको बॉडी ज्यादा कैलोरीज बेटर या ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है इवन एट रेस्ट। सो उसका ये बेनिफिट है कि ज्यादा कैलोरीज खर्चा होने की वजह से आपको ज्यादा बेटर फैट लॉस भी मिलता है। So guys, what is the repetitions to be followed? ठीक है, I call it higher the better. ठीक है, now that you know that male hormone नहीं है, female hormone है, which does not promotes muscle growth. So why do we need to do those 1 rep, 2 rep, 3 rep, 4 max reps wala weight training? ठीक है, better is you have softer cartilage, you have alignment का थोड़ा बहुत issues, you don't have the hormones which is needed, which promotes strength. तो guys keep it simple, engage in higher repetitions. Higher repetitions का मतलब ये नहीं आप 40-50 repetitions करो, safe repetitions for a female to perform. My personal choice is anything between 10 to 15 ना, हर सेट में 10, कम से कम 10 रेपिटेशन, ज्यादा से ज्यादा 15, उससे ज्यादा मत जाना, उससे कम मत जाना, ठीक है। सो 10 से 15 इज द रेंज जहां पे हाइपरट्रोफी भी होता है, यानी मसल मास बढ़ता भी है, आपका ज्यादा कंट्रोल होता है इन वाइल परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, आप ज्यादा आपका मस्कुलर इंड्योरेंस भी अच्छा खासा डेवलप होता है व्हेन यू डू इट इन दैट रेंज। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वेट सब मैक्सिमल या फिर आप लिमिटेड वेट उठाने की वजह से इंजरीज चांस भी कम हो सकते हैं। सो फाइनली वी मूव टू द कंक्लूजन पार्ट, एवरी वुमन शुड एंगेज इनटू वेट ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे कोई भी महिला नहीं है जिससे वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग करने के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, नुकसान तब हो सकते हैं जब आप गलत तरीके से वर्कआउट करें या फिर आप बहुत ज्यादा heavy lifting start kare, theek hai, you focus more on lifting weights than the form. So guys, conclusion simple, every individual who has 18 years completed 18 years of age should engage into weight training at some point, should start weight training, theek hai. It can be as late at 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, that does not matter, start weight training guys. So this was it with should women perform weight training guys. आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो make sure to like and subscribe and share with your friends. Please mention in the comment section कोई ऐसा particular video या topic जो आप चाहते हो मैं बनाऊं, so I'll be more than happy to do it for you. Thank you and bye.